Good morning, students. This is your teacher Neelam Elawat, and we are doing our chapter 9, Biomolecules. Now, in this particular video, students will be talking about the macromolecules. I hope you remember what are macromolecules. Yes, the molecules that have their molecular weight more than 1000 daltons. Sometimes even their molecular weight is even more than 10,000 daltons. Okay. So macro means big molecules. The molecules whose molecular mass is more than 1000 daltons. Now basically in this category there are three molecules that are considered to be macromolecules: proteins, polysaccharides, and the third is nucleic acids. In the last videos, we have talked about the proteins and the polysaccharides, and in this particular video, we will be focusing on the nucleic acids. And as I told you that these are the macromolecules, so they'll be present in the acid insoluble part, which is called your yes, the retentate part. Okay. So they will be present in the retentate part. Now, as you know, dear student, nucleic acids, they are basically present in our DNA as well as in your RNA. Or we can say that RNA and DNA, they are basically made up of the nucleic acids. So nucleic acids, they are the heteropolymers. Heteropolymer, just split this word and understand the meaning. Hetero means different. Polymers means chain. Okay. So nucleic acids, they are chain of different kinds of nucleotides. They are chain of different types of nucleotides. Now what does a nucleotide means? A nucleotide base is in general consists of three components. First, a sugar, right? A sugar, a pentose sugar. On one end, it will have an attached phosphate group. Okay. On one end to the sugar, there will be phosphate group will be attached to it. And on the other side, there is a nitrogenous base. So we can say a nucleotide is consisting of three parts: a sugar, right? A sugar. Second is a phosphate group. And third is a nitrogenous base. So nucleotide is made up of three components: the phosphate group, sugar, and the nitrogenous base. Okay, and as I told you that nucleic acids, they are basically polymers of now DNA actually means deoxyribonucleic acid. Okay, what is the full form? Deoxyribonucleic acid. RNA, ribonucleic acid. Okay, so you must remember these full forms, these short forms as well as the expanded forms, because they are very, very important ones. Now coming to as I told you that the nucleic acids basically are composed of nucleotides, and the nucleotide is basically made up of three things. Now coming to the first part, that is a nitrogenous base. Okay, nitrogenous base. Nitrogenous base, they are heterocyclic compounds. Okay, they are referred to as heterocyclic compounds. And they can be divided into two types: purines and pyrimidines. I hope you remember that we have discussed the nitrogenous bases in a separate video already. Yes. Okay, so purines and pyrimidines. A and G, that is arginine and guanine. Okay, A means arginine and G means guanine. These two are purines, while uracil, thymine, and cytosine, they are pyrimidines. Okay, uracil, thymine, and cytosine, they are your pyrimidines. Out of this, uracil is only present in RNA. Okay, uracil will only be present in RNA, while thymine and cytosine, they are present in DNA. In RNA, you will have uracil as well as thymine. Cytosine, thymine will be absent. So RNA contains uracil and cytosine. DNA contains thymine and cytosine. The second component is the sugar.
Sugar is a ribose sugar. The sugar which is present in case of RNA is a ribose sugar, while the sugar which is present in case of DNA is a deoxyribose sugar. So as I can say, there are two types of sugar. One is ribose sugar, it is present in the RNA, and second is deoxyribose sugar, which is present in the DNA. Now apart from this, if you remember, we have three components. One I told you, nitrogenous base, second is your sugar, and third is your phosphate group. Okay, so these three things, they will be making up the nucleotide sequences. Now coming to the secondary structure of DNA. Now let's talk about the DNA, the structure of DNA. The structure of DNA was initially proposed by Watson and Crick, and thus it is also referred to as Watson and Crick model. Now if you look at the DNA structure, as just now I told you that it is made up of nucleotides, and a nucleotide is made up of three components: nitrogenous base, pentose sugar, and the phosphate group. So these three things you can see, they are present in the DNA structure. The nitrogenous base and the pentose sugar. Okay, nitrogenous base and the pentose sugar. Just look at this chain, this straight chain, this chain. Okay, this is referred to as the backbone. Clear? This is referred to as the backbone. Now this backbone is made up of the pentose sugar and the phosphate group. ये देखिए, जो आपकी ये जो शुगर है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपकी शुगर है और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है. सो जो बैकबोन है आपकी डीएनए की, दैट बैकबोन इज मेड अप ऑफ द फॉस्फेट एज वेल एज पेंटोज शुगर. While in between these structures, these ladders which are connecting these things, this one, I'm highlighting this black one, this one, and this one, they are made up of nitrogenous bases. Okay, they are made up of nitrogenous bases. So phosphate and the pentose sugar, they form the backbone of DNA, while the nitrogenous base pairs, they form the steps in the ladder. ओके अगर हम लेडर से कंपेयर करें डीएनए के स्ट्रक्चर को, तो जो हमारे वर्टिकल पार्ट है वो हमारा पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, एंड द स्टेप्स ऑफ द लेडर, दे आर मेड अप ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द एडेनिन ए, guanine G, thymine T, cytosine, they are present in the DNA, while uracil is absent. Now coming to the next topic that we have is the nature of bonding or nature of linking monomers in a polymer. Means किस तरीके से आपके monomer units एक polymer बनाने के लिए combine होते हैं. How they are linked with each other. See, in case of proteins we know amino acids join with each other. Okay, one amino acid joins with the another amino acid, and there is a formation of bond between them, and that bond is referred to as a peptide bond. Okay, this bond is referred to as the peptide bond. So in case of proteins, amino acids, they are linked with each other with the help of bond which is called as a peptide bond. Okay, and the first amino acid, you can say this first amino acid has a carboxylic group here, and this next amino acid, this will have NH2 group here. Means the carboxylic group of the first amino acid will join with amino group of the second acid, so there is a formation of peptide bond. तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो वो फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को आपस में लिंक करता है, एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और दोनों के ज्वाइनिंग से, दोनों के एडिशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और दो प्रोटीन्स और यू कैन से दो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हो जाते हैं, एंड इन द सेम मैनर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इस तरीके से आपस में लिंक किए जा सकते हैं, एंड दे कैन फॉर्म अ पॉलीमर इन केस ऑफ प्रोटीन्स. सेकेंड इज पॉलीसेकेराइड. पॉली मीन्स मेनी. Just go with the name. Poly means many. Saccharide means sugar. So monosaccharides are joined by a glycosidic bond. ठीक है, अगर ये हमारे पास एक मोनोमर यूनिट है, मोनोमर joins with another monomer. Let's suppose glucose. We can take glucose as a monomer. So glucose
ग्लूकोज. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज से जुड़ता है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. एंड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन द बॉन्ड अगेन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड. So monomers, they will be linked with each other by formation of bond which is called as a glycosidic bond. And as you can see here, this is one monomer, this is another monomer, and there is a linking of this. So this is a formation of glycosidic bond. So it is a bond formed when the individual monosaccharides, they are linked between two carbon atoms and there is a removal of water molecule. So जब दो monomers, दो monosaccharides आपस में link होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. थर्ड, इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सी वी नो इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो, राइट, न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो देयर इज अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ अमाइन, यू कैन से योर DNA and RNA. सो इन न्यूक्लिक एसिड्स फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट द थर्ड कार्बन, 3' carbon of one sugar. It joins with the nucleotide of the 5' carbon of the next sugar. So one sugar will join with another. In this case, you will find one sugar will join with another. And in this first sugar, the phosphate group of this sugar, जो first sugar है हमारी, उसका जो phosphate group है, जो कि 3' end पर मौजूद है, वो आपका 5' कार्बन से जुड़ जाएगा नेक्स्ट शुगर के. एंड दिस बॉन्ड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बॉन्ड. ओके, दिस बॉन्ड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बॉन्ड. सो न्यूक्लिक एसिड्स हैव एन एस्टर बॉन्ड, प्रोटीन्स हैव अ पेप्टाइड बॉन्ड, monosaccharides they have a glycosidic bond. So we have 3 different types of bonds in case of macromolecules. Now coming back to the structure again of the DNA, as I told you, this backbone is made up of sugar and phosphate. देखिए जो बैकबोन है वो आपकी शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई है, बीच में आपके नाइट्रोजन बेस पेयर्स एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं. ओके, नाउ इन डीएनए बेसिकली इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. देखिए डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. There are 2 strands which are arranged anti-parallel to each other. Thus we can say DNA has a double helical structure. यानी DNA के अंदर 2 strands मौजूद हैं जो आपस में intertwined है और वो double helical structure form करते हैं. और एक full turn में 10 steps होते हैं, यानी 10 base pairs they are attached. 10 एक turn के अंदर 10 base pairs हैं. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं. सो 10 बेस पेयर्स का एक फुल टर्न बनता है. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द फुल टर्न इज अप्रॉक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम. 34 एंगस्ट्रॉम होती है और हर 2 बेस पेयर्स के बीच में, 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम का. ओके, एक फुल टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं. 10 बेस पेयर्स का टोटल डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम्स होता है, यानी 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है. एंड एट ईच स्ट्रैंड, हर स्टेप पर आपका डीएनए जो है वो 36 डिग्री से टर्न होता है. तो 10 आफ्टर 10 बेस पेयर्स इट विल हैव अ टर्न ऑफ 360 डिग्री. सो 2 बेस पेयर्स के बाद 36 डिग्री का टर्न है. टोटल लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है. 2 बेस पेयर्स के बीच में आप देखिए, ये जो बेस पेयर्स हैं, सपोज ये आपके 2 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. और 10 बेस पेयर्स का आपका यू कैन से यहाँ से यहाँ तक जो है, जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है. सो टोटल टर्न का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है. 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है. एक बेस पेयर्स के बाद 36 डिग्री का टर्न है, यानी 10 बेस पेयर्स के बाद टोटल 360 डिग्री का टर्न हो जाएगा हमारे डीएनए में. नाउ एज यू नो, ए विल ऑलवेज पेयर विद टी, प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन. ये हमने याद रखना है. देखिए जो हमारे बेस पेयर्स हैं यहाँ देखिए, ए विल पेयर विद टी और दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी,
G will always pair with C और दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. Okay, so we have two types of hydrogen bonding. One has a double bond. A and T have double bonds, while G and C have three triple bonds, three hydrogen triple bonds. So base pairs के बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. दूसरा, सेकेंड, देखिए शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल है आपका, पेंटोज शुगर. लेट्स हैव दिस. दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल एंड दिस शुगर मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद फॉस्फेट ग्रुप ऑन आइदर साइड. शुगर मॉलिक्यूल जो है वो आपका फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है दोनों साइड्स पर. आई होप दिस इज क्लियर. Phosphate group is attached with, sugar is attached with two phosphate group, one on either side. So this bonding is referred to as phosphodiester bond. इस bond को हम कहते हैं phosphodiester bond. Okay, इस bond को क्या कहेंगे? Phosphodiester bond. So दो bonding अभी हमने डिस्कवर की है. एक जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. एक के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है. दूसरा है हमारा जो पेंटोज शुगर है वो दोनों साइड्स पर आपके फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. थर्ड, जो ये हमारी शुगर है ये हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में भी एक बॉन्डिंग है. देखिए ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच में बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एक और बॉन्ड आपको नजर आ रहा है. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. Okay, this base pair is called as, this bond is called as glycosidic bond. So in total जो नाइट्रोजन जो हमारा DNA मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको तीन तरीके की बॉन्डिंग नजर आती है. वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड द थर्ड इज एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. So this was regarding the structure of the DNA. Now coming to the next part that we have is a metabolism. See, dear students, can you tell me what does this word metabolism means? Metabolism. Metabolism means, metabolism actually involves two words. One is anabolism. Let's use a different color. One is anabolism and another is catabolism. जो metabolism है आपका ये दो words से मिलकर बना है, anabolism and catabolism. Anabolism means synthesis. Means where small molecules they will combine to form a big molecule, that is synthesis of bigger molecules. Catabolism means breakdown. Okay, anabolism means synthesis, catabolism means breakdown. So synthesis or a breakdown both are part of the metabolism. Okay, anabolism is to synthesize, catabolism is to break down, and anabolism and catabolism together they constitute the metabolism. Okay, I hope this much is clear to everyone. Okay. So all the biochemical reactions that are occurring in an organism together constitute the metabolism. Like we have few examples: removal of carbon dioxide from amino acids to form amine. अगर हम अमाइनो एसिड्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं सो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन. रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड बेस, अगेन रिमूवल मीन्स द कैटाबॉलिज्म. हाइड्रोलिसिस ऑफ glycosidic bond again means synthesis. So as I told you, metabolism simply means anabolism and the catabolism. If we are synthesizing some molecule, catabolism if we are breaking down some molecules, right? Now the organic compounds, the molecules that take part in the metabolism, they are referred to as metabolites. ऐसे molecules को हम कहते हैं metabolites. And there are two, rather than metabolites we can also call them biomolecules, right? So the organic compounds that take part in metabolism, they are called, referred to as metabolites. I hope you remember the word metabolites. Okay. Now we can categorize these into two types. One is a primary metabolite, another is secondary metabolite. Primary metabolite जो होते हैं बेटा, they actually directly involved in the normal growth, development and reproduction.
ये ऑर्गेनिज्म में के जो है जो मेन प्रोसेसेस हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, like your amino acids, sugars, nucleic acid, lipids, vitamins, etc. Means we can say they have a specific physiological function. उनका एक specific physiological function होता है. They have been assigned a specific function. Okay. First, they are directly involved in the normal growth, development, reproduction, and secondly, they have some specific physiological function. And they are absolutely necessary. Right? Secondary bolites जो होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ. ये जो है नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू दिस, बट दे आर नेसेसरी फॉर, ओके, दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दे आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. जिंदा रहने के लिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़रूरी हैं. इनका ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है. ओके, लाइक योर एल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, terpenoids, essential oils, toxins, lecithins, drugs, polymeric substances. So these are very, very important for the survival, but they do not have a direct role in the growth, development and reproduction of the organisms, but they are required for survival. जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. Like I'm showing you a list here. These are all your secondary metabolites. Alkaloids, the few examples are morphine and codeine. Terpenoids like monoterpenes and diterpenes, essential oils, lemongrass oil, toxins, abrin or ricin, lectins, concavevalin A, drugs, vinblastin, curcumin, polymeric substances like rubber, gum, cellulose. So these are a few examples of the secondary metabolites, and these are very important. You can be given a name and you can be asked to define them. So coming, as we were talking about the metabolism process, see, whenever we take up any process, we will find there are series of interlinked chemical reactions. हम किसी भी particular अगर process को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे chemical reactions हैं जो आपस में interlinked है. Okay, we can just compare this interlinking with the traffic signals, with the automobile traffic chart that is present in the city. Like this, just look at this. If you start with this sucrose, cellulose, they will form glucose 1-phosphate, then glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, then GAD, pyruvate, acetyl coenzyme, and acetyl coenzyme can participate in the formation of different compounds. Okay, so you can start with any molecule, and that molecule will connect you to different pathways, and thus there is a web of interlinked pathways that will exist in any metabolic process. So we can say that the flow of metabolites through a metabolic pathway has a definite rate and direction. तो किसी भी मेटाबोलाइट को अगर हम देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पाथवे में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसका इंटरकन्वर्जन होता है, एंड दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. डायनेमिक मीन्स फ्लक्चुएटिंग, चेंजिंग. तो हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल कई जगह, कई डेफिनेट पाथवेज में पार्टिसिपेट करता है, कई मेटाबॉलिक पाथवेज में वो पार्ट होता है, एंड उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है. इसीलिए हम इसे कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो, उनका जो कंसंट्रेशन है वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट आर ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी, depending upon the various chemical reactions that are occurring. Okay? Because जो reactions है वो आपके सभी catalyzed reactions हैं. आपकी बॉडी में कोई भी uncatalyzed metabolic conversion नहीं है. Okay? And all these catalysis they have done by their rate is increased by certain proteins, and those proteins they are referred to as enzymes. And as we were talking about the anabolic and catabolic pathways, I have listed a few examples here. Let's differentiate, because sometimes they may ask you to differentiate between these two metabolic pathways. So in case of anabolic pathways, simple molecules, they will combine together to form a complex structure.
तो एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और वो एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, and that is why we call it as a constructive process. It's a constructive process, it's a synthetic process where simple molecules they will join to form a bigger molecule. कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स में, और ये आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन होता है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। एनाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी कंज्यूम होगी, जबकि कैटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी फॉर्म होगी। We can have any like formation of acetic acid, formation of proteins, formation of polysaccharides. यहाँ पर आप even example of you can say glycolysis, where glucose will be converted into pyruvate and energy will be released. And the energy that is being released through the catabolism, और जो भी energy आपके किसी भी catabolic process से remove हो रही है, that energy is being released because the bonds are being broken. क्योंकि उस प्रोसेस में बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सो एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, एंड दैट एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेटिक पाथवेज। वो एनर्जी जो है वो आपके सिंथेटिक पाथवेज में यूटिलाइज होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर एटीपी, दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Most of the energy which is present in our body, it is stored, it is being kept in the form of ATP. In the form of ATP, that is your adenosine triphosphate, and we know they all are stored in the mitochondria. ये सारी energy जो है आपकी mitochondria में store की जाती है, and whenever the chemical reactions they are occurring in the cell, then this energy is being supplied so that that chemical reaction can be facilitated. Now coming to the living state. See, in our body there are tens and there are thousands of chemical compounds that are present. हमारी body के अंदर जो है बहुत सारे chemical compounds present है, and we call these chemical compounds as metabolites or as biomolecules. And the concentration of these chemicals, these compounds is present in the body is changing. हर कंपाउंड की जो concentration है, जो amount है हमारी बॉडी में, वो different है, okay, and that amount also keeps on changing. Like अगर हम example देते हैं बेटे जी, so suppose the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.5 to 5. देखिए अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो 4 to 5 के बीच में होता है, 4 to 5 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड में जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज की, दैट इज बिटवीन द 4 to 5, राइट। जबकि जो आपके हार्मोन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, हर हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में डिफरेंट होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन, जितने सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है। जब मैं बात कर रही हूँ कि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में ऐसा होता है, बट फास्टिंग लेवल एंड आफ्टर, सी एक ग्लूकोज लेवल हम कैलकुलेट करते हैं जब हमने खुद खाना नहीं खाया होता, एक हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर ईटिंग द फूड। सो वंस बिफोर ईटिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड विल बी लो, and after eating the blood level of glucose in our blood will be high. So very important, as I told you, that the amount of all chemical compounds or all metabolites that are present in our body, that keeps on changing. They are not at equilibrium. जो हमारी बॉडी में systems हैं ये equilibrium में नहीं है, वो compounds जो है उनकी fixed amount नहीं है कि वो fixed ही रहेंगे, उनकी value change होती रहती है, और इसीलिए हमारी बॉडी में जितने भी systems हैं उनमें equilibrium नहीं होता है, ओके वो लगातार चेंज हो रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए हमारी बॉडी में उन चीज़ों का लेवल लगातार चेंज होता रहता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नो लिविंग स्टेट कैन एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ जो जिंदा है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, और कोई भी लिविंग स्टेट बिना मेटाबॉलिज्म के भी नहीं रह सकती है। तो अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो डिफरेंट केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, ओके, एंड दस वी कैन से लिविंग स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं
that living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform the work. तो लिविंग स्टेट का मतलब है वो कंडीशन जब हम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, एक स्टेडी स्टेट मेंटेन किए हुए हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग प्रोसेस जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं जिससे कि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकें, लेकिन वो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते. ओके, इक्विलिब्रियम अचीव होते विल बी डेड. सो लिविंग सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता. ओके एवरीवन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी. वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट कर नहीं सकते और बिना मेटाबॉलिज्म के हम लिविंग कंडीशन में नहीं रह सकते. आई होप क्लियर. ओके, नाउ लेट्स कम टू दी, आई होप यू रिमेंबर दिस, दैट एनर्जी, देयर इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एनर्जी सिंपली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है. द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स द सेम. और एक क्लोज सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी. लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट सम कन्वर्जन्स हियर, लाइक मैकेनिकल एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल इनटू लाइट, light into heat and energy, but the total sum up energy of this system will remain same. So total energy same रहेगी. Let's have a very simple example. Suppose we are hungry. When we are hungry, we are eating food. So this food will give us chemical energy. Okay, this food will give us chemical energy. Then we'll be using this chemical energy for various daily activities. So we'll be converting this chemical energy into mechanical energy. हम दौड़ने के लिए, काम करने के लिए हर जगह इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे. इसका मतलब हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं. नाउ कमिंग टू देयर इज अनदर रूल that is called a second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that जो सेकेंड लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, इट सेज कि हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी का इनपुट चाहिए बाहर एटमॉस्फेयर से. ठीक है, अगर हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन हम कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते, एंड वी रिक्वायर कॉन्स्टेंट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें लगातार है. जैसे मैंने अभी कहा, व्हेन वी आर हंग्री वी टेक फूड. सो फूड इज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. फूड जो बाहर से लिया जाता है. सपोज करिए आपका सेल है, अब इस सेल को खाना चाहिए तो वो बाहर से आता है. सो देयर इज़ कंस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. अगर ये एनर्जी सप्लाई नहीं होगा तो यू विल फाइंड दिस सेल विल कन्वर्ट इनटू अ डेड सेल. अगर इस सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी अपने आप को मेंटेन करने के लिए from the outer atmosphere, as I told you, so there is no input of external energy. External input नहीं है energy का, so this cell will become dead. So as I told you, cells must capture, store and use energy to counter attack the effects of the law of. तो सेल को है कॉन्स्टेंटली उसे बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एक सेल को बाहर से एनर्जी कैप्चर करनी है, स्टोर करनी है, उसे यूज़ करना है, जिससे वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओवरकम कर सके. Now, second law of thermodynamics क्या कहता है? The second law of thermodynamics says that हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है डिसऑर्गेनाइज हो जाने की. Okay, the second rule of thermodynamics it says that every system has a tendency to become unorganized with time. हर सिस्टम ये कोशिश करता है कि वक्त के साथ वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए, लेकिन एक सेल को अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन में रखने के लिए कॉन्स्टेंटली बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, क्लियर? दूसरा, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं या किसी सेल में हो रहे हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होते. मतलब लगातार हम कुछ ना कुछ एनर्जी जो है एनवायरनमेंट को लॉस करते रहते हैं. ठीक है, सो वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वी आर ऑल्सो गिविंग द आउटपुट टू द एनवायरनमेंट.
हम एनर्जी ले भी रहे हैं एनवायरनमेंट से और हम एनर्जी दे भी रहे हैं, यानी हम एक क्लोज सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते, हम एक ओपन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर सेल जो है बाहर से एनर्जी लेता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और वो बाहर एनर्जी सप्लाई भी करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है कि सेल अपने आप को मेंटेन रखता है ऑर्डर्ड वे में। देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ इवेंट दैट इज बीइंग मेंटेन्ड इन द सेल, ओके, एंड द सेल बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, जो कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओवरकम करता है कि अगर हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिल रही है तो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली रीऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे let's understand the simple example, second law of thermodynamics. Suppose हमने घर बनाया, we have built up a house, we have painted it well, right? अब वक्त के साथ हम देखेंगे कि वो डिसऑर्डर, उसके अंदर जो है डिसऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसकी दीवारें, उसकी छत, द वॉल्स, एवरीथिंग विल कॉन्स्टेंट रिक्वायर मेंटेनेंस। घर को लगातार मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हमें लगातार उसके ऊपर काम करना रहता होता है। एंड देन व्हेन वी रेनोवेट कराते हैं हम घर को, तो पैसे लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, सो दोबारा से हमारा घर जो है वो रिन्यू हो जाता है। अब आप समझिए कि घर जो है, घर पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, और वो डिग्रेड होता जाता है। यानी हर सिस्टम पर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्ट करते हैं और वो सिस्टम डिसऑर्गेनाइज हो जाता है विद टाइम। अगर हम उस पर एनर्जी इनपुट देते हैं, when there is an input of energy, then again the system will become organized. So एक लिविंग थिंग को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। सेम वे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज it will start following the law of second law of thermodynamics, that with time it will become disorganized, and once it becomes disorganized it will not be function properly. I hope you understood. So जो हमारा लिविंग स्टेट है बेटे, वो यू कैन से डायनेमिक स्टेट है, वो नॉन इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन उसे लगातार काम करने की ज़रूरत होती है और इस काम के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। So we require constant supply of energy because a lot of metabolism process are occurring in the body. So living organism है, उसके अंदर metabolism है, इसलिए सभी केमिकल्स की जो concentration है वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। ओके, यस। सो लेट्स कम टू योर होमवर्क फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक नोट्स ऑफ दिस टॉपिक and you will read the page numbers 149, then 151 to 153. And if there is any doubt, any query which you feel, you can send your queries to me. Okay, everyone? Okay, so that's all for today. Bye, everyone.